हाय हेलो सत श्री अकाल। यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। और आज मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज मैं एक ऐसी वुमेन ऑफ द नेशन से बात करने जा रही हूँ जिन्होंने ये साबित किया है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर को तबीयत से उछाल के तो देखो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिसेस वर्ल्ड 2022। पूरे 21 सालों के बाद ये खिताब हमारे पास आया है। वेल, आई वांट टू वेलकम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड प्राइड सरगम, who is with us right now. सरगम कौशल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? Thank you very much. One newspaper that has always been in my house is Punjab हाँ, Kesari, बचपन से लेकर. So yeah. I was really young when I can't hear. Yeah, so I was really young when Punjab Kesari started coming to our house, and yes, I would wait for that Saturday or Friday wala with children's कौशी, section आता था. हाँ। नहीं, जो चिल्ड्रन सेक्शन आता था, वो छोटी सी मैगजीन आती थी बच्चों के लिए, वो दैट वाज माय फेवरेट. सो यस, हैज आई हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री विद पंजाब केसरी. आपकी बहुत खुशकिस्मत हो रहा है आपका इंटरव्यू करते हुए, क्योंकि आप 21 सालों के बाद आप जीत लाई हैं हमारे घर पे मिसेस वर्ल्ड 2022 का, है ना? तो ये पूछना तो देखो बहुत क्लीशे हो जाता है कि हाउ आर यू फीलिंग। ऑब्वियसली वी नो दैट यू आर टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर तरह से आप अभी मुझे नजर आ रही हैं तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस क्राउन को अपने सर पे पहनना, है ना? सो फिर भी मैं जानना चाहूंगी, हाउ वाज दैट मोमेंट when you were announced as Mrs. World 2022, क्योंकि मिसेस इंडिया वर्ल्ड से शुरुआत हुई थी और उससे भी शायद बहुत पहले से सफर की शुरुआत हो गई होगी, व्हाट आई थिंक पर्सनली, है ना? सफर बहुत लंबा था, बट वो एक मोमेंट जब वो क्राउन आपके सर पे होता है ना, तब आप वो सब स्ट्रगल सब कुछ भूल जाते हो. तब आपको लगता है कि एवरीथिंग fell right into place. Everything happened just the way it was supposed to happen. I am a firm believer of power of manifestation, and I have manifested this dream of mine from a long time. And not just me, my whole family. तो ऐसा लगा कि हर किसी की जो दुआएं थी वो सब पूरी हो गई उस एक मोमेंट में. तो कुछ भी स्ट्रगल, कुछ भी दुविधा जो रास्ते में आई, लगा कि ठीक है, अच्छा ही हुआ कि आई. Now that all of that happened is because I'm here now. एब्सोल्युटली। अच्छा, एक बात मैं जरूर ये डिस्कस करना चाहूंगी शो पर, बिकॉज यू आर एन इंस्पिरेशन टू मैनी नाउ, है ना? तो जैसे अगर मैं एक एक लेडी की बात करती हूँ, एक फीमेल की बात करती हूँ, तो कहा जाता है लाइक शादी के बाद करियर वरियर तो भूल जाओ एंड ऑल दैट। और अभी आजकल ऐसे मंच हैं जो मिस इंडिया का, इन्हें मिसेस इंडिया के किताब के लिए भी आपको पेजेंट में खड़े होने का मौका देते हैं, पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं। तो आपने भी ये मिस मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया के लिए सोचा था? ये आगे चलते चलते जब शादी हुई 2018 में तब मिसेस में तब्दील हो गया ये? हाँ, ऐसा ही हुआ था एक्चुअली. I My father wanted me to participate in Miss India, and बहुत सालों से उन्होंने ये रट लगाए रखी that why don't you go for it, you are very. I was very slim, so उनको लगता था पतली लड़की पतली है तो मॉडलिंग सही, इसके लिए बिल्कुल सही है. हाँ, एंड शक्ल भी ठीक ठाक ही थी, तो बिकॉज थैंकफुली माई मदर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो उनकी थोड़ी बहुत जीन्स आ गई हैं बीच में. सो शी वाज लाइक कि तो बोथ ऑफ देम वर ऑफ द थॉट कि ठीक है, इनको इसको मॉडलिंग या इस सब में भेज देना चाहिए, बिकॉज बचपन से यही तो हरकतें करती रहती है अतरंगी मिरर के सामने खड़ी होके. बट दैट टाइम आई फेल्ट दैट it's not just, pageant mein they don't just want you to look good and be presentable. They want you to have a confidence which I did not have at that time, because I was not very confident about my body, about my looks, as I think every other teenager is very insecure at that time. तो मैं भी just एक regular teenage की तरह थी. But then when I got married, I realized that things have started changing in me personally, because I found this man who is now my husband, and he's been a very good influence in my life, a very positive influence. And then of course I started working and all of that, तो एक confidence build up हुआ. तो मुझे लगा कि मिस मेरे लिए सही टाइम नहीं था. Mrs. was probably my calling. That was my right time. So I मतलब just मैं कह कि जैसे कहा जाता है ना लड़कों के लिए या मेल्स के लिए कि बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी मैन देयर इज अ वुमन, तो हाँ, तो बिहाइंड द सक्सेस देयर इज अ मैन, every woman is a man. है ना? It's true. It's true. मेरे तो केस डिड में तो it's absolutely true.
सपोर्ट किया ये एक अलग मैटर है, लेकिन शादी होने के बाद कहीं पर भी टर्निंग पॉइंट आपको लगा था कि यार अब तो नहीं सपना पूरा हो सकता, या अब अगर मैं आगे जाऊंगी तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इन लॉज की या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाती है, उसके बारे में? Actually, I have been very lucky in that case, I would say, because since my husband is in the defense services, we never got to live with our in-laws. Not that उन्होंने कोई restrictions डालनी थी. It's just that कि I was always away from वो family responsibilities जो होती हैं कि रिश्तेदारों के बीच में मैं कभी रही ही नहीं. So it was always just me and my husband. So we have this very beautiful partnership जिसमें वो अपना काम कर लेता है, मैं अपना काम कर लेती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते when we are working. He had given me that freedom that you do whatever you want to do. Not that freedom is what I need from him, but just saying that he had given me that space to myself, that you do what you want to do, you do what you have to do. I'm sure not a lot of people get that after marriage, because we still are living in a society which is more or less still patriarchal. But then I think we do have men in our society now who are brought up by such women, such empowered women, कि अब उन लड़कों को पता है कि how to treat their wives, how to treat their sisters or mothers. So that's why I never really struggled with that. और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना दो जो मेल पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो हमारे फादर हु इज द फर्स्ट हीरो फॉर एनी गर्ल, दूसरा होता है अगर शादी हो जाती है तो पति देव, है ना। तो इन दोनों का ही सपोर्ट आपको मिल गया, सो मींस आप उनके लिए लकी मैस्कट रही होंगी, लेकिन वो भी आपके लिए काफी सपोर्टिव रहे। फैमिली का सपोर्ट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव टू गो टू सच काइंड ऑफ अ पेजेंट। जैसे हम आपने खुद भी कहा कि सोसाइटी कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल है विमेन को लेकर, है ना। तो बट देन मैं जानना चाहती हूँ पर्सनली कि आपने और भी मॉडलिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया अपने पूरी इस जर्नी के दौरान, आप टीचर भी हैं, है ना। तो ये तो और भी अच्छी बात है, टीचर जो गुरु होते हैं वो तो हमें काफी कुछ सिखाते ही हैं, और आज आप खुद ही गुरु बन गई हैं एक और तरह से। तो आप हमें प्लीज बताएं कि और मॉडलिंग कॉम्पिटिशन से ये वाला जो पेजेंट शो था ये कितना अलग था, या इसमें जाने से पहले कितना नर्वसनेस था सरगम को। ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ बिकॉज जो और लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आपकी तरह उनको एक आइडिया मिल सके। तो मॉडलिंग जो मैंने अभी तक करी है, इट इज मोस्टली बिन फॉर प्रिंट मीडिया. I've never really walked the ramp. The only time I got to walk the ramp was actually this year itself for Lakme Fashion Week, which was a big thing for me because for a married woman to compete first, वो auditions जब होते हैं और उसमें 100-150 से भी ज्यादा मॉडल्स आते हैं उस टाइम, and they are brilliant because they've been doing it for forever. And I was very new, and they liked my walk, they liked my personality, and they made me walk for I think Pearl Academy. उनके international students के लिए मैंने walk किया, तो वो that was something else. So I've been doing print shoots अभी तक, तो उसमें मुझे कभी भी इतना, because कैमरा के सामने I'm not shy to pose, but then walking is another ball game. And then from modeling coming to pageantry is a very different leap altogether, because pageantry and modeling don't go together at all. यहाँ तक क्योंकि walk भी एक जैसी नहीं होती है, but काफी लोगों को लगता है कि हाँ मॉडल है तो फिर pageant कर ही सकती है, pageant करती है तो modeling कर ही सकती है. Not at all. मुझसे पूछो, because it is actually a very very different game, very different field altogether. So when modeling तो शुरू हो चुकी थी while teaching. But pageantry, as I said, that it was something that I had to prepare myself for, because pageantry doesn't happen in one go. People take part in many local pageants और फिर जाके किसी बड़े pageant में participate करते हैं. मेरे लिए just happened कि मेरा first pageant ही काफी बड़ा pageant हो गया मेरी life का. और but of course during the pageant we had so much training going on. I mean, now I look back at all those pictures on my phones of all the things that I used to do. I realized that Sargam, hats off to you. You have just, because I am not that kind of a person, honestly. I'm a very lazy person. मुझे बेड से बाहर निकालना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गोल रह चुका है मेरी मम्मी का. मैं बस ये सोचती थी कि हाँ कल कर लेंगे. But now when I look back and I see how much hard work I have put into it, which is not me at all.
And it has actually changed my life because now I am always on time. Now I know my schedule. Now I know how to handle my home, how to handle work, how to handle my husband, my dog, my parents, everything. Yesterday I came home with after that Vegas trip को पूरा करके मैं कल interviews देके घर वापस आई और आज घर एकदम चमका दिया because that's how women are. We need to be perfect all the time, and there are so many responsibilities that we do. Multitasking जो मैं कभी नहीं करती थी, now I'm doing all of that. So what I'm trying to say, it's pageant and modeling. Pageants are something that transform you completely 360 degree. They Yes. change you as a person, they change your personality, they change the way you talk, the way you look, the way you walk, and the way you perceive yourself. You become so confident after a point of time that you start inspiring people. And I think I won't say much कि मैंने बहुत लोगों को inspire किया है, but if somebody somewhere sitting at her house has thought that चलो मैं नहीं कर पाई but मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ये कर पाए, I think उससे बड़ी विक्ट्री कोई और हो ही नहीं सकती. ये क्राउन, ये सैश से भी बड़ी विक्ट्री होगी वो मेरे लिए. बिल्कुल सही. अच्छा, इसमें जैसे आपने शुरुआत में कहा ना कि पहले का अगर मैं कॉन्फिडेंस की बात करूं अपने, तो मेरे अंदर वो नहीं था कि मैं ऐसा कुछ अचीव भी कर सकती हूँ, मतलब इस तरह के पेजेंट में मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ. और ये कुछ अलग ही बड़े लेवल का होता है, ग्लोबल लेवल का होता है. जब आप स्टेज पे स्टेप इन कर रहे होते हैं, वो मोमेंट क्या था और जिस तरह से ग्रूमिंग हुई होगी पूरी आपकी, वो कॉन्फिडेंस जो अप हुआ होगा, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं. So training is always very hands-on. During Mrs. India, the training started. In fact, usse pehle, when I registered for Mrs. India, so we had this few months where mentors from all over the country, good, great mentors were training us. And we were trained for etiquettes, holistic development, Q&As, walk, everything was taken care of. And then when I became Mrs. India, उसके बाद आप सोचिए कि इंटरनेशनल ट्रेन करने के लिए उन्होंने उस मेंटोरशिप को मतलब डबल कर दिया एकदम से. I was here and I was there months later. So I was trained by Coco Berry. I was trained by Anjali Raut and Alicia Raut. Both of them have this academy called Coco Berry, and I mean, the world knows about it. All Miss Indias, Harnaas, Sandhu, all of them have been trained under them. And more than ramp walk was an extremely important part of it, because now when I compare myself to all the other contestants at Mrs. World, I know my walk was the best. Oh, wow. Everybody used to say that walk agar dekhna to Sargam ka dekho. And then coming back to communication skills, voice crafting, how you're supposed to feel your voice, how are you supposed to speak what you feel and feel what you speak, how that works. So all of that was a very crucial part. Interview की training जो होती है वो बहुत important रहती है, because you don't know from where the questions will come and what kind of. We had 4 different judges during our PIS. And वो पर्सनल इंटरव्यू में आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं from any part of your life, and you have to be prepared. You just cannot talk about me, all the time. You have to talk about your country. You have to talk about your family. You have to talk about the values that you hold. You have to talk about the platforms, the changes that you're making in your country, and why they should choose you as Mrs. World. What is so special about you? तो इस तरह के questions जब आपसे पूछे जाते हैं, तो you have to be prepared for them, like in a heartbeat. And that is what we were trained for in India. I was trained for. And so it was a crucial training. I remember not sleeping. I remember becoming a student all over, making notes and everything, And even the night before this competition, the finale of Mrs. World, I was just going through my notes thinking, Sargam, aata to sab kuch hai, but udhar kuch aisa aur पूछ लिया तो क्या करोगी? And actually that happened, they asked me a one word question, that what is it that you want the judges to know about you? And I had never really given it a thought. Ki kya, what would I say to that? But then all that training that I had done all those months, all of that content that was there in my subconscious, it kind of brought together a story, and I was able to answer every question that they asked. What did you answer them, वैसे उसके लिए? I said strength. I want the judges to know that
I have strength. And that's what the judges really liked, because now that after PI उन्होंने मुझे समझ लिया था, जान लिया था, तो उनको पता है ये word मेरे लिए इतना important क्यों है. So they said after the show, they told me, when you said that word, we knew you were going to win. Oh, that's that's really sweet. सोहा अजरुद्दीन, अदिति भी थी जिन्होंने 21 साल पहले खिताब जीता था हमारे मिस वर्ल्ड का. आई एम सॉरी. तो उनके सामने लाइक वो कैसा मोमेंट था? पहले भी मुलाकात हुई है इनसे कभी? जी जी. सो मेरे नेशनल पैजेंट के जजेस थे ये लोग. Aditi Govatrikar was one of the judges during my finale of Mrs. India. And I remember her bringing this clear box जिसके अंदर ये crown था उनका 21 साल पहले. और वो लेके उन्होंने ऐसे रख दिया जैसे एक म्यूजियम में एक पीस रखते हैं. And then every contestant, all the 50 contestants at Mrs. India were around that case. और मैं कहीं पीछे खड़ी थी और मैं पीछे से दूर से वो केस देख रही थी, वो क्राउन देख रही थी, और मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे. नॉट बिकॉज कि मुझे क्राउन चाहिए, वो मोमेंट कि वो क्राउन कितना स्पेशल है, दैट इट इज केप्ट इन दैट केस, हाउ स्पेशल, हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज, राइट? सो that kind of brought tears in my eyes, thinking how would she be feeling holding this crown for last 21 years, and what if somebody breaks this record and brings the crown again to India? How would that feeling be, for that person who breaks that record? So I think subconsciously somehow मैंने वो manifest कर लिया था अपने लिए ये जीत. आपने भी कहा और मैं भी यकीन करती हूँ ये काम करती हैं, बिल्कुल करती हैं. और फिर जब अदिति से बात हुई मेरी, just before Mrs. World happened, she talked to me on the phone. It was so sweet that she took out time to talk to me, and she said, Sargam, somehow I feel this is our year. Somehow I feel that you are going to make it. 21 is my lucky number, Sargam, and I'm sure you're going to do wonders this year. So मेरे केस में ना मुझे लगता है hard work से ज्यादा it has been destiny that has played its role. Some things are destined to happen to you. Yes, absolutely. But yes, उसके साथ साथ आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपके एफर्ट्स, आपका टैलेंट, सब कुछ साथ में ही मिलता है, सबका अमेलगमेशन होता है, तभी वो पॉसिबल होता है. वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से जान होती है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. वेल, ये जो आपने पहना है ना क्राउन, तो आप लग तो बड़ी खूबसूरत रही है, लेकिन वो मोमेंट क्राउन पहनाया जा रहा होता है ना, आई कैन फील दैट कि वो कितना इमोशनल मोमेंट होता है किसी भी लड़की के लिए अपने देश के लिए क्राउन जीतना, क्योंकि खुद की बात नहीं होती, तब पूरे देश की, पूरे हमारे इंडिया को, पूरे लाइक वर्ल्ड को लाइक प्राउड फील कराने की बात होती है. तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर भी बहुत बढ़ता है. मैं जानती हूँ कि आप बच्चों के लिए काफी कुछ करती हैं, आप टीचर भी हैं, तो ऑफकोर्स काफी रिस्पॉन्सिबल है. बट इसे पहनने के बाद और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको महसूस हुई कि इसको कितने केयर के साथ आपको आगे लेकर चलना? Honestly, when I was standing there और मुझे क्राउन पहनाया जा रहा था, उस टाइम मुझे it was not a personal feeling at all. उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था ये एक पर्सनल विक्ट्री नहीं रही अब. अब ये देश की विक्ट्री हो गई है. Now I'm not someone's wife or someone's daughter. I'm this country's daughter now. And the responsibility, the weight of this crown that I felt in that moment was tremendous. And I won't say that it was something that scared me. It was something that I was kind of looking forward to. Because मुझे ऐसा लगता है कि during this pageant journey, एक चीज जो मैंने सीख ली है कि आप लाइफ में जब आप कुछ बन जाते हो, कुछ हासिल कर लेते हो, तो at that time you should start focusing not on yourself but on the greater good. अगर आपने सोसाइटी के लिए इस लाइफ टाइम में कोई एक अच्छा काम नहीं किया ना, तो आपकी लाइफ का मुझे लगता है कोई मकसद नहीं है. If you are only living this life for yourself, then it doesn't mean anything, especially when you are at such a platform where you can inspire so many people. And I felt that weight that day. And I realized that whatever I'm doing, छोटा बड़ा जो भी कर पा रही हूँ अभी मैं, thankfully इस क्राउन और इस पॉपुलैरिटी के चलते, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी, और अब मुझे और करना है, और लोगों को इंस्पायर करना है, और लोगों से जुड़ना है, कोशिश करनी है कि एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो मेरे आसपास के
शहर में या मेरे आसपास के विसिनिटी में जो लड़कियां लाइफ में, कुछ लड़कियां लड़के जो भी कुछ लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहते हैं लीग से हट के, उनको वो एक पुश उनके पेरेंट्स से मिले और उनके पेरेंट्स को वो जो इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं वो मुझसे मिल जाए. Because my parents stood there for me and that's why I'm here. My husband stood for me and that's why I'm here. So I need to make sure that this story goes out everywhere. People know that dreams can come true only if you have just if you have the right people around you. Your dreams can come true. Paisa, society, kuch matter nahi karta. It's just those 4 or 5 people in your family around you who can make that change. So And especially, I would say, in rural areas, because India is actually what we see in the rural areas. Right? Exactly. So then now when I get messages from people who are not, city people, who are not city people, who are those rural areas से आए हुए लोगों से जब वो messages आते हैं कि सरगम, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी को कुछ भी करने की आजादी दे सकती हूँ, क्योंकि आज मैं अपनी ससुराल में ये फोटो दिखाती हूँ ना तुम्हारी, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर ये कर सकती है शादी के बाद तो कोई भी कर सकता है, और ये कुछ बुरा काम नहीं है. Because pageantry was always something, people used to think that it's frivolous, but it's Look not. down. Yes, but it's not. It is so empowering. I wish people learn that. एब्सोल्युटली. और आई होप कि हमारे इस इंटरव्यू से भी लोग समझ पाए इस बात को. और आपको एक बार फिर से बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और पूरे वर्ल्ड को कॉन्ग्रेचुलेशंस है. हमारे लिए भी बड़े प्राउड और बड़े गर्व की बात है कि हम आज सरगम कौशल को इंटरव्यू कर पाए. तो थैंक यू सो. आई विश आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो. बच्चों को आप कैंसर अवेयरनेस के लिए ऑलरेडी अभी इतना कुछ अवेयर कर रहे हो, टीचर आप ऑलरेडी हो, और आगे चल के सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे और बेहतरीन काम करता हो. थैंक यू. Thank you, Namita. Thank you so much. It means a lot. Thank you. Please take care.